Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma and today we are going to study about Battle of Chamkaur. Now what is this Battle of Chamkaur which was also in the Hindu newspaper today? A very big poster of this Chamkaur Sahib was in the Hindu newspaper. So let us understand what this battle was, where is Chamkaur Sahib, what is the history behind it, because it is important from the modern Indian history's point of view. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हम इसको किसी भी एंगल से मिस नहीं करेंगे especially if you're preparing for prelims 2022 23 or 24 make sure that you make small notes from this lecture today आपके छोटे माइंड मैप्स या डायग्राम्स जो आप बनाओगे ना वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके रिवीजन में स्मॉल नोट्स कैन बी वेरी इजीली फॉर्म्ड थ्रू दिस लेक्चर ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हम आज की क्लास बैटल ऑफ चमकौर से Also, the class PDF will be uploaded on a Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You can download the class PDF directly from there. Telegram channel का link भी दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे वहां से आप फटाफट से आज के आज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसको पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो आई हैव अपलोडेड द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस पीडीएफ आल्सो ऑन द चैनल यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं आज का लेक्चर बैटल ऑफ चमकौर Before we start with the Battle of Chamkaur, here's a small announcement for all of you. Unacademy is launching Champions Conclave for UPSC CSE aspirants from 20th till 22nd November. That is from tomorrow it is starting. Now you can get expert guidance from those who have cracked this exam, those who have experience of years in this field and those who are the subject experts. So we have Unacademy educators, toppers and bureaucrats who will be guiding you in your UPSC CSE journey. They'll be guiding you, they'll be handling your doubts, they'll be giving you a roadmap how to go about this journey. So do not miss this chance, enroll today. Also, Unacademy has launched new batches starting from 17th November. Make sure that you subscribe to Unacademy Plus today. Use this code ARPITA10 so that you can get 10% discount on your Plus subscription. To make your journey smooth and to also make sure that your syllabus is completed in time and you have ample time for revision, join these batches today. So when we talk about the Battle of Chamkaur, which is known as Battle of Chamkaur Sahib also, there were two parties involved in this battle. At one side we had Guru Gobind Singh Ji representing Khalsa and at the another side we had the coalition forces of Mughals which was led by Wazir Khan. Okay. Now here Guru Gobind Singh Ji makes a reference to this battle in his victory letter Zafarnama also. Remember this, what is Zafarnama? It says victory letter. And the result was here Mughal victory, Mughals won. This battle was conducted in 1705 near the village of Chamkaur. That is why it is known as Chamkaur battle. So there was from the Mughal side the coalition forces. There were Mughals, there were Rajputs also and it was led by Wazir Khan, Nawab of Sirhind. And what they did, they tried to capture to Anandpur Sahib in the hope of capturing Guru Gobind Singh Ji in 1704. And this battle continued for 7 long months. मुगल फोर्सेस जो थी, जो कोalition फोर्सेस थी, उन्होंने क्या किया था, आनंदपुर साहिब पे कब्जा कर लिया किस उम्मीद से कि गुरु गोबिंद सिंह जी को वो अपने कब्जे में ले लेंगे। 7 महीने ये बैटल चला और दोनों ही साइड्स पे काफी हेवी लॉस दोनों ने फेस किया। बट द कोalition forces offered a safe passage to the Guru and his followers. The head of coalition pledged they would not harm the Guru, his family or his soldiers if they let them win. So there was a peace treaty which was sent. औरंगजेब के नाम की जो पीस ट्रीटी है वो भेजी गई गुरु गोबिंद सिंह जी के खेमे की तरफ. But when Gobind Singh Ji and his followers stepped out of the Anandpur Sahib fort, they were attacked. That means the Mughals they betrayed the Guru Gobind Singh Ji and his troops. बोला तो ये था कि आप बाहर आ जाओ, हम आपको जाने देंगे, आपके लिए बल्कि रास्ता बना देंगे, आपको यहाँ से क्विकली निकाल देंगे बाहर, ठीक है. बट गुरु गोबिंद सिंह ने जब पीस ट्रीटी को एक्सेप्ट करके बाहर निकलते हैं तभी आनंदपुर साहिब फोर्ट के बाहर 20 दिसंबर की रात को उनको कैप्चर कर लिया जाता है, उन पे अटैक किया जाता है. एंड दिस इज द सेम प्लेस वेयर गुरु गोबिंद सिंह जी लॉस्ट 2 of his elder sons in this battle because of the Mughals and the hill Rajas. So there was a preamble to the battle. After Guru Gobind Singh Ji left na Anandpur Sahib on December 5 and 6, so he crossed the Sarsa river. अपने followers, अपने disciples के साथ उन्होंने सरसा river को cross किया. They were crossing the river, but the Mughals they started attacking them. The coalition forces of Mughals attacked them.
and Guru Gobind Singh Ji and his disciples, they asked for permission of the city chief for shelter, ठीक है, in their gadi or we can call it haveli, but he refused. But his younger brother allowed the Sikhs to stay in the haveli. तो सिटी चीफ से कहा गया, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा पे अटैक हो रहा है तो हमें आपके हवेली में थोड़ी देर के लिए जगह दे सकते हैं. सिटी चीफ ने मना कर दिया शेल्टर देने से, बिकॉज मुगल्स वर अटैकिंग. बट जो यंगर ब्रदर थे सिटी चीफ के, उन्होंने रुकने का इंतजाम सारा गुरु गोविंद सिंह जी का कर दिया. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड एट चमकौर साहिब? Guru Gobind Singh Ji was always accompanied by the 5 Sikhs that he had initially baptized. They were known as Panj Pyaras. उनके बड़े बेटे थे, 40 सोल्जर्स थे और 5 प्यारे थे जो रात को निकलने की कोशिश कर रहे थे आनंद साहिब गुरुद्वारे से. They were surrounded by an army of Wazir Khan and Sher Muhammad Khan, who was the younger brother of Malar Kotla's chieftain. This ये जो आपकी मिक्स आर्मी आई थी, कोalition आर्मी, उन्होंने उन्हें कैप्चर कर लिया. गुरु सेंट आउट सोल्जर्स इन स्मॉल स्क्वाड्स बिकॉज टोटल 40 सोल्जर्स वर ओनली देयर. तो बिल्कुल एकदम मल युद्ध हुआ, छोटे छोटे स्क्वाड्स में गुरु जी ने वहां पर सोल्जर्स को भेजा. बट इन दीज अटैक्स his sons died. 3 of the Panch Pyaras, they also died fighting this battle. Mohkam Singh, Himmat Singh and Sahib Singh. And when Guru Gobind Singh Ji saw that he has very few soldiers left, nobody is alive now, so he decided that we will leave this place and we will carry on our mission. So it was at the Chamkaur fort that Panch Pyaras issued an Hukumnama. Hukumnama means edict, which ordered the Guru to leave. And this was the first edict which was issued by Panch Pyaras. खालसा ग्रुप का फॉर्मेशन होने के बाद पंच प्यारास ने पहला एडिक्ट अप्रैल 13, 1699 को इशू किया था. ठीक है, इसके फॉर्मेशन के बाद इशू किया था 1704 में, क्योंकि खालसा का फॉर्मेशन हुआ है अप्रैल 13, 1699 में. And before Guru Gobind Singh Ji left, Guru gave his attire. Attire means clothes and kalgi to Sangat Singh, Mazhabi Singh, who reassembled them. 3 सोल्जर्स थे, उनके साथ साथ उन्होंने भी किले को छोड़ दिया, अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए, so that the Mughal forces can be confused. Okay, and 5 days later, Guru Gobind Singh's 2 younger sons, they were 9 and 7 years of age, they were bricked alive for refusing to convert. मुगल्स ने बोला कि अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना रिलीजन. गुरु गोबिंद सिंह के 2 छोटे बच्चे थे, 9 साल का एक लड़का था, एक 7 साल का, दोनों ने ही मना कर दिया. इतना जज्बा था, they were so passionate about their specific religion that they did not you can say kneel down in front of Mughal forces. So they were bricked alive. उन्हें जिंदा ईंट के पीछे ईंट की दीवार में चिनवा दिया गया. So where is this Chamkaur Sahib? It is at the banks of Sarhind Canal. मोरिंदा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, रूपनगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है. ये वही प्लेस है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह ने अपने 2 बेटों को बैटल में खो दिया था मुगल्स के हाथों. एंड गुरुद्वारा कटलगढ़ साहिब इज ऑल्सो नोन एज गुरुद्वारा शहीदगंज. ये गुरुद्वारा भी काफी यूनिक है, जो चमकौर साहिब के आसपास ही लोकेटेड है. ठीक है, इट इज बिल्ट एट द साइट वेयर बाबा अजीत सिंह एंड बाबा जूजर सिंह, एल्डर सन्स थे गुरु गोबिंद सिंह जी के, अलॉन्ग विथ 37 अदर सोल्जर्स, they died fighting the battle. So this was all for today. ये था आपका आज का लेक्चर बैटल ऑफ चमकौर. I hope you understood each and every detail of this battle.